अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर अशफाक हसन का नाम आपने सुना होगा। पाकिस्तान के मारूफ माहिर मुआशियात भी हैं और उनके साथ हमने इससे पहले कुछ इंटरव्यूज़ भी किए और इन इंटरव्यूज़ में बुनियादी तौर पे उन्होंने पाकिस्तान के IMF से लिए गए कर्ज़ों की बड़ी मुखालफत की। उनका ये कहना है कि IMF के कर्ज़े पाकिस्तान जैसी मईशत के लिए दरअसल एक ज़हर कातिल की हैसियत रखते हैं। डॉक्टर अशफाक हसन खान ने हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम, बल्कि ये एक उसको कहते हैं अल्लामा इकबाल लेक्चर, जिसका एहतमाम पाकिस्तान सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के प्लेटफॉर्म और बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ने किया था। और इसमें डॉक्टर अशफाक हसन ने पाकिस्तान समेत कम आमदनी वाले तरक्की पजीर ममालिक की कर्ज़ों की सूरत हाल का तज्ज़िया किया। इन ममालिक को कर्ज़ों के संगीन बहरान का सामना करने की वजूहात और G20 ममालिक को इन ममालिक को कर्ज़ों में रिलीफ़ कैसे देना चाहिए, ख़ास तौर पर ये कि पाकिस्तान इस मुश्किल सूरत हाल में क्यों पड़ा। ये उनका लेक्चर है जिसके चंद इक़्तिबासात यानी उसकी झलकियाँ हम आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। अगर आपके अंदर सलाहियत है अपनी पॉलिसीज बनाने की, the IMF and the World Bank people, they are not unreasonable people. They are not unreasonable, provided you convince them. आपके पास क्रेडिबल चीजें होनी चाहिए। तो अशरफ साहब बैठे हुए हैं, ये उस वक्त गवर्नर थे स्टेट बैंक के और मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होता था, और भी हमारे साथ 5 से 6 लोगों की एक टीम थी। कोई मजमा लेके हम नहीं चलते थे। तो ये 5 से 6 लोग वेल नेट थे आपस में। ये पॉलिसीज हम बनाते थे, उनसे शेयर करते थे। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये टैक्स के जो टारगेट होते हैं कि FBR ने कितना टैक्स इकट्ठा करना है, ये मैं और मेरे साथ उस वक्त के मेंबर टैक्स पॉलिसी डॉक्टर अथर मकसूद साहब होते थे FBR में, जो आजकल हमारे नस्ब में प्रोफेसर भी हैं। हम दोनों बनाते थे और जब IMF के साथ मुज़ाकरात होते थे तो हम उनके सामने रखते थे कि ये टैक्स का टारगेट होगा, ये हमारी मेथोडोलॉजी है, हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया है। अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है तो आप हमें बताएं। वो कहते जो आपने दिया बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं होता था। ग्रोथ के नंबर के, ग्रोथ के टारगेट क्या होंगे? 5% होगा, 6 होगा, 7 होगा। अगर आपके पास क्रेडिबल एक्सरसाइज की हुई है, आप उसको कहते हैं कि जी ये ग्रोथ के नंबर है। क्या इन्फ्लेशन होगा वो स्टेट बैंक बता देता था। तो जब आपके अंदर सलाहियत हो तो ये अदारे जो हैं आपकी बातों पे चलेंगे। लेकिन आप अगर निकम्मे हो जाएं, आपके पास सलाहियत ना हो, तो यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दीज इंस्टीट्यूशंस। वो इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं। उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को फाइलों से देखा है, वो उस हिसाब से आपके सामने रख देते हैं। आपके अंदर सलाहियत अगर नहीं है तो जो वो देंगे आपने करना है, आपने साइन करना है, क्योंकि आपके अंदर नहीं है सलाहियत। तो डोंट ब्लेम द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ब्लेम आवरसेल्फ दैट वी डिड नॉट बिल्ड द कैपेसिटी। हमारे ज़माने में एक डेट ऑफिस बनाया गया, हायर किया मैंने लोगों को, ट्रेन किया उनको। 8-10 बच्चे थे, बड़े यंग, बड़े ज़बरदस्त। जैसे ही मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से निकला, वो गवर्नमेंट चेंज हुई, वो 8-10 बच्चे जो हैं वो दाएं बाएं हो गए। कोई उसको अमेरिकन एम्बेसी ले गया, कोई डिफेंस वाले ले गए, कोई कहीं वर्ल्ड बैंक लेके चला गया, और जो कैपेसिटी हमने बिल्ड की थी वो दूसरों के काम आ रहा है, हुकूमत पाकिस्तान के लिए काम नहीं आया। तो ये किसका कसूर है? ये हमारा कसूर है। तो डोंट ब्लेम कि जी सारा जो हमारा प्रॉब्लम है वो ये IMF या वर्ल्ड बैंक ने ये सारा किया हुआ है। अगर हमारे अंदर सलाहियत नहीं है तो फिर वो डोमिनेट करेंगे। अगर हमारे अंदर सलाहियत है, हम डोमिनेट करेंगे। और ये हमने साबित करके दिखाया, और आपको कुछ नंबर दूंगा, आप देखेंगे कि किस तरीके से डेट के नंबर कम हुए हैं हमारे।
क्योंकि ये हम मैनेज कर रहे थे, हम बना रहे थे पॉलिसीज। तो ये मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। लेट मी कम बैक टू द टॉपिक। मई के महीने में G7 की समिट हुई हिरोशिमा, जापान में। आई एम ऑल्सो द मेंबर ऑफ द एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट, which is based in Tokyo, and that institute served as T7, Think Tank 7. They became the official think tank of G7 when the meeting was held in Hiroshima, Japan in May. So, Asian Development Bank Institute formed a group of experts. Although I was not supposed to be, I was an advisory council member, but they said that you have been running the debt office of Pakistan, so you should be part of this exercise. So out of the 4 people, I was one of them. We drafted debt relief package for low-income countries, low-income developing countries. Naturally, some of my views was not reflected, and for the obvious reason, I don't want to go into the detail. But I thought that from at least this platform, I should also express those views, because I personally believe that without involving all these stakeholders, that is the bilateral creditors, the multilateral agencies, and the private creditors, there will be no meaningful debt relief for low-income countries. And I will give you statistics also. Now, before I present my thoughts, it is very essential that what is happening around the world, the challenges that we are facing, is very important to explain. As we all know, the world is passing through a most turbulent time in recent history. Many epoch-making events are taking place which are changing the global economic and political environment internationally. On economic front, the global economy is witnessing multi-dimensional, complex, and yet interconnected extraordinary challenges. वो challenges हैं क्या? These challenges include decades high inflation around the world, extraordinary high interest rate in Europe, in the United States, that is impacting developing countries' debt payment capacity. Slowing economic growth globally, lesser job creation, unemployment is rising. A strong dollar also affecting the developing countries' capacity to repay its debt. Rising debt and distress in developing countries. न सिर्फ developing countries में debt बढ़ रहा है, distress situation भी aggravate हो रहे हैं. And finally, slowing the Chinese economy. Chinese economy भी अपने मसाइल से वो slow हो रहे हैं, and Chinese economy is a locomotive for rest of the world, so therefore rest of the world is also feeling the problem. These are the challenges that we are facing globally. आप हर रोज सुनते होंगे तकरीरों में यूरोपियन कमीशन के जो सदर हैं हमारे यहाँ, उनकी तकरीरों में भी सुनते होंगे, जो बाइडेन की तकरीरों में भी सुनते होंगे, डीकपलिंग एंड डी रिस्किंग ऑफ इकोनॉमीज. ये एक नए नए टर्मिनोलॉजीज हैं जो आ रही हैं. बेसिकली काउंटर, हाउ टू काउंटर चाइना, दैट्स इट. ये सारी चीज़ें चाइना को कैसे रोकना है, ये टर्मिनोलॉजी उसी के लिए आई है. डीकपलिंग फ्रॉम चाइना, और नो, हाउ कैन वी डीकपल फ्रॉम चाइना, बिकॉज चाइना इज द लार्जेस्ट सिंगल ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ मोर देन 127 countries. So how can you decouple with China? It will create a lot of problems around the world.
तो हुआ कि जी डी रिस्किंग करेंगे, वी विल मिनिमाइज आवर डिपेंडेंस ऑन चाइना। अब ये तो दुनिया, द वर्ल्ड हैज डिवाइडेड इनटू दीज लाइंस। A recent study by the IMF staff shows that trade fragmentation alone could cost world up to almost 7% of the combined GDP in the long term. And long term means by year 22 to 2036, 2030. Now, economic and financial fractions will further accelerate the pace of de-dollarization. अब दुनिया में जब ये जंग हो रही है, फ्रैगमेंटेशन हो रही है, तो ये डिस्कशन किधर चला गया? de-dollarization, reduce your dependence from dollar. These are the new development which is taking place। और मैं आप सबसे स्टूडेंट से भी कहूंगा कि आप लोग भी इसकी तरफ रिसर्च करो कि इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे दुनिया के लिए। The low income countries are heavily in debt, and more countries are adding to the list of debt distressed countries. Such economic and financial frictions in the midst of rising geopolitical and geo-economic tension will be harmful for the debt relief initiative taken by the G20 countries. ये उनके लिए भी नुकसानदेह है अगर ये आपस में बटे रहेंगे तो। Therefore, my suggestion is inclusion and not exclusion, cooperation and not confrontation,